Good morning and Assalamu alaikum class 5. I hope you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I am your social studies teacher Aruj Yunus. As you all know, in our previous video lecture we discussed about the means of communication: computer, radio, telephone, newspaper, etc. Means of communication are very important nowadays, and there are very advanced means of communication in Pakistan as well. There are newspapers, magazines, telecommunication, radio, television, computer, इंटरनेट. ये हमारी आज की जो इम्पोर्टेंट ज़रूरतें हैं उनमें ये शामिल हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे कंट्री में क्या हो रहा है, हमारी सिटी में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, ये हम जान सकते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सकते हैं. तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटरनेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे हर काम जो है अब इंटरनेट से किया जाता है. मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट यूज़ हो रहे हैं, हर जगह इंटरनेट यूज़ हो रहे हैं, बैंक्स में, ऑफिसेज़ में, घर में, स्टडी के लिए. तो ये अब हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ बन चुकी है, क्योंकि हमारे डेली जो है हम इसको यूज़ करते हैं. Important information: all the organizations and the people of world have stored information on internet in the form of websites. Many websites have been developed to spread the teachings and the tafsir of Holy Quran. Website is a collection of different web pages interlinked with one another. अब आपको पता है डिफरेंट यूज़ है हमारे पास इंटरनेट के. आपने कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखनी है वो देख सकते हैं, हम कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन. यानी कि हर चीज़ की जो सहूलत है वो हमें इंटरनेट ने प्रोवाइड कर दी है. हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिनको हम ओपन करके देख सकते हैं. कोई भी चीज़ से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन लेनी हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, हम अपने डिवाइसेस के थ्रू, अपने इंटरनेट के थ्रू हम ईज़िली कर सकते हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अब हर चीज़ की जहाँ कोई अच्छी बातें हैं वहाँ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो आज हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, कल हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे मींस ऑफ कम्युनिकेशन के. तो एडवांटेजेस क्या हैं वो तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं. एडवांटेजेस: द कंसेप्चुअल गाइडेंस. Media provides conceptual guidance to the society. It presents opinions, debates, analysis on various issues. Media also plays an important role in promoting the ideology of Pakistan. यानी कि अब इंटरनेट और या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो भी है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अगर आप टीवी देखें तो आप देखते हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, वो पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान में क्या हो रहा है. आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम हर तरह से इससे एडवांटेज जो है वो हासिल कर सकते हैं. सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स. पीपल गिव मच इम्पोर्टेंट टू पब्लिक ट्रेडिशंस. सम ट्रेडिशंस हैव बिकम social voices like Veni, Karokari and Vatasatta. Media gives awareness regarding these voices. Radio and television present documentary programs, films, news, dramas and dialogues on these topics. अब आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं हर चीज़ को लेके, चाहे वो गुर्बत हो, पढ़ाई हो या जुल्म पे हो. तो इन सब चीज़ों पे बात हम कैसे कर सकते हैं अगर हमारे पास हमारी मींस ऑफ कम्युनिकेशन ना हो, तो हमें तो पता भी ना हो कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है. तो हम इसके थ्रू जो है अवेयर रह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है और क्या हालात हैं. जैसे अब कोरोना के बारे में आपको कैसे पता चला? आपको टीवी के थ्रू पता चला, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू पता चला. मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, इनके थ्रू ही हमें पता चला ना. पॉलिटिकल अवेयरनेस. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल पे हमारे डिफरेंट पॉलिटिशियंस आते हैं, डिबेट्स होती हैं. तो आजकल हमारे कंट्री में पॉलिटिकल हालात क्या, सियासी हालात क्या हैं, वो भी हम अपने मींस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अवेयर रह सकते हैं. मीडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट मींस ऑफ जनरेटिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस इन द पब्लिक. Hidden facts are told to the people. Rulers, opposition and politicians convey their point of view to the people through media. Media establish contact between government and public. अगर ये मीडिया ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा हमारी पॉलिटिशियंस जो है, हमारे सियासतदान जो है, PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी, वो क्या कर रहे हैं और हमारे मुल्क के हालात क्या हैं. तो इस तरह से हम अवेयर रह सकते हैं. नेशनल यूनिटी. Media promotes the sentiments of the unity on national festivals. On these occasions, national songs, anthem, programs related to current affairs, special editions, documentary files and special reports are presented.
اب ہمارے ڈفرینٹ تہوار آتے ہیں، عید آتی ہے، 14 اگست آتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے جوش و خروش سے پورے پاکستان میں اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز جو مسلم ممالک ہیں وہاں پہ منائے جاتے ہیں تہوار. تو ہم ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی لوگ اس کو کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پھر جب 14 اگست یا 23 مارچ آتی ہے تو ڈفرینٹ نیشنل اینتھم، اس کے علاوہ جو ہمارے نغمے ہیں، ملی نغمے جو آپ بڑی شوق سے سنتے بھی ہیں، وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں. ہیلتھ اینڈ میڈیکل پرابلمس ٹو پرووائڈ انٹرٹینمنٹ، پروجیکشن آف نیشنل ڈیولپمنٹل پروجیکٹس، ایجوکیشن، ریڈکشن آف کرائم. یعنی کہ ہر چیز جو ہے اب ہم اویئر رہ سکتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں کس طرح سے ہمارے مینز آف کمیونیکیشن کی وجہ سے. میڈیا ٹرائز ٹو ڈیولپ consciousness in public about health so that a healthy society can be developed. People are made aware through advertisement. اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب کرونا بھی آیا تو کس طرح سے پورے ٹی وی چینلز میں ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس دی گئی، بتایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. ابھی بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ. انٹرٹینمنٹ، اب آپ ڈفرینٹ ڈراماز دیکھ سکتے ہیں، سانگس چل رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کارٹونز ہیں جو ہم اپنی فن ٹائم میں، اپنے لیے ٹائم میں ہم ان کو انجوائے کر سکتے ہیں. اور ہمارے ملک میں کیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں، ہمارے ملک کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے، سب ہم ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں، موبائل میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپس میں دیکھ سکتے ہیں. ایجوکیشن، یہ بہت بڑا ایک ہمارے پاس ریسورس ہے ایجوکیشن کا. جو بڑے لیول پہ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے، 9 10 کے، وہ اپنی بہت ساری اسٹڈی جو ہے نیٹ پہ سے بھی کر سکتے ہیں، گوگل سے سرچ کر کے کر سکتے ہیں. میڈیا presents programs on educational affairs and policy. Students get benefit from the lessons of Allama Iqbal. Open universities, internet and radio also plays an important role in the progress of education. اب آن لائن سسٹم جو ہے اسٹڈی کا وہ بھی انٹروڈیوس کروایا جا چکا ہے، جس سے اب دیکھیں کرونا ٹائم میں اسکول میں بچے بھی نہیں آ رہے تو ان کی پڑھائی کا کتنا حرج ہو جاتا اگر یہ ہم آن لائن نہ آپ کو پڑھا رہے ہوتے. Eradication of crimes. Media covers the crime reports in such way that people begin to hate crimes. Crimes کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیا جرم ہوا ہے، کس نے چوری کی، کس نے ڈکیتی کی، کس نے کیا کیا. تو ہر طرح سے ہم اویئر رہ سکتے ہیں مینز آف کمیونیکیشن کی وجہ سے. تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. Now I'm giving you home task to search more about on the advantages of means of communication and do the reading of this topic. We will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.